Hello everyone, my name is Kanika Jindal. Welcome to my YouTube channel Gyaanguru. आज के लेक्चर वीडियो में we'll discuss about the concept of risk. Risk होता क्या है? What are the various types of risk? What is systematic risk? What is unsystematic risk? And what is the difference between systematic and unsystematic risk? So let's start the video. Let us understand the meaning of risk first. Risk होता क्या है? रिस्क इज अ वेरी कॉमन टर्म. आप सभी ने ये टर्म सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? सपोज अ पर्सन इज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट एंड दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी जिसमें मैं कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्यूचर में, बट एज वी ऑल नो फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड सो इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड दिस uncertainty about the future is known as risk. Risk is basically the uncertainty or the variation in the returns. जब भी कोई वेरिएशन आ जाता है जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम में होता है, कोई भी ऐसा डेविएशन, उसको हम रिस्क बोलते हैं. अगर सपोज जहां पे वेरिएशन कम है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जहां पे ये वेरिएशन ज्यादा है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. So risk can be defined as the variability of returns. It is the potential for variability in returns. An investment whose returns are fairly stable is considered to be low risky investment. Let us discuss about the various types of risk now. So risk is broadly classified into two categories. First is systematic risk. अब हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री एक सोसाइटी का पार्ट है. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं और उस सोसाइटी के जो पार्ट एज अ बिजनेस सबको इफेक्ट करते हैं. ऐसे जो फैक्टर्स की वजह से रिस्क अराइज होता है विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, उस टाइप के रिस्क को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. फॉर एग्जाम्पल रिसेशन, फॉर एग्जाम्पल वॉर. तो ऐसे जो रिस्क हैं ये होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. नेक्स्ट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क इज अ रिस्क which is it is the uncertainty which is related to a specific company और इंडस्ट्री. ये सारी कंपनीज को अफेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी ड्यू टू लेबर स्ट्राइक या फिर अनसर्टेनिटी ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो इस टाइप की जो अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क अराइज होता है, दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन. Total risk is the summation of systematic risk plus unsystematic risk. Now let us discuss about various types of systematic risk. As we have already discussed कि risk की दो broad categories हैं, systematic risk and unsystematic risk. Now systematic risk भी बहुत सारे types का होता है, जैसे interest rate risk, market risk and purchasing power risk. Interest rate risk क्या होता है? It is the risk which is caused due to the changes in the interest rate of an security from time to time. इस रिस्क की वजह से क्या होता है? इस रिस्क की वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स. ऐसे रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है बॉन्ड और डेट की वैल्यू पे बिकॉज दे हैव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट वी हैव मार्केट रिस्क. Market risk is associated with the fluctuations in the prices of shares or securities which are listed in the stock exchange. Next, we have purchasing power risk. It is basically the risk which reduces the value of money and the ability to buy goods and services, and also it is known as the inflation risk. इसको हम inflation risk भी बोलते हैं. ये originate होता है from the fact that it affects the purchasing power adversely, and it is never advisable to invest in a security during an inflationary period. Let us now discuss about various types of unsystematic risk. Unsystematic risk three types के होते हैं. First is business risk.
बिजनेस रिस्क अराइज होता है व्हेन बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल और चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, जब बिजनेस अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशंस टाइम पे पूरी नहीं कर पाता, तो उस वजह से अराइज होता है हमारा बिजनेस रिस्क, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज लिक्विडिटी रिस्क. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क को हम क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं. ये अराइज होता है, सपोज वी हैव गिवन some loan to somebody, and the person who has taken the loan, the borrower will not be able to repay the loan, which can result a financial loss, and this is known as the financial risk or the credit risk. Third we have operational risk. ये टाइप के रिस्क अराइज होते हैं ड्यू टू द फेलिंग ऑफ ह्यूमन एरर्स, ड्यू टू द रिस्क ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, जो ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चेंजेस इन द प्रोसीजर, इंटरनल प्रोसीजर, पीपल, पॉलिसीज एक्सेट्रा. अब हम बात करेंगे डिफरेंस की सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में. सो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क कॉज होता है due to the large market events such as recession, war, interest rate, political upheaval, etc. Whereas unsystematic risk is caused by industry or company specific reasons or factors such as labor strikes, operational failure, business insolvency, etc. Next in systematic risk unavoidable होता है. We cannot control it क्योंकि ये ऐसे events की वजह से होता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं. Whereas in unsystematic risk, we can take necessary steps to avoid it because it is related to the factors which are company or industry specific. Next is systematic risk cannot be eliminated by diversification, whereas unsystematic risk can be eliminated by diversification. सिस्टमैटिक रिस्क का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत वास्ट होता है, जो अफेक्ट करता है ओवरऑल सेगमेंट को, ओवरऑल मार्केट को. यहाँ अनसिस्टमैटिक रिस्क हैज अ लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट विच अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री. सिस्टमैटिक रिस्क को हम हैंडल कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेजिंग एंड एसेट एलोकेशन, whereas unsystematic risk can be eliminated by diversification. So this is the basic difference between systematic risk and unsystematic risk. So that is all about risk. Thank you so much and have a nice day.